तो आपका बजट पेश हो चुका है और बजट में मिडिल क्लास को राहत दी गई है, लेकिन विपक्ष का क्या कुछ कहना है इसको लेकर के वो हम आपको सुनाते हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। सर, जिस तरीके से एक बजट पेश किया गया, बजट से क्या उम्मीदें थी आम जनता को और क्या वो पूरी हुई? देखिए, एक चीज के लिए आपने तो भाजपा की तरफ से बहुत तारीफ सुना है। ये मिडिल क्लास टैक्स का जो है 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये भी सोचिए कि जिनके पास रोजगार है, जिनको तनख्वाह मिल रहा है, उनके लिए शायद कुछ अच्छा खबर आया। लेकिन जो आप देखेंगे कि हमारे देश के बेरोजगारी इतने बढ़ गए हैं, उसके बारे में कुछ सुना नहीं। बेरोजगारी का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया अपने वित्त मंत्री ने। ये भी देखिए कि हमारे देश में युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल पे है। जो हमारे देश में आजकल कॉलेज एजुकेटेड बेरोजगारी है, उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएंगे? आपका जो FDI है, जो विदेशी पैसे आए इन्वेस्टमेंट, सारे हमारे देश से निकल गए हैं, भाग जा रहे हैं पैसे यहाँ से। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होना है तो हो नहीं रहा है। लेकिन मेरा चिंता यह है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्थायिक स्थिति के असली जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम कुछ नहीं सुना। और लोग को जो आजकल कठिनाइयां हैं, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, उसके बारे में कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़24। इस बजट को बिहार का बजट कहा जा रहा है। हकीकत क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज झा जी। आपको भी लगता है कौन कि कह रहा है बिहार का बजट? बिहार का बजट नहीं, कौन कह रहा है? तमाम विपक्ष के लोग। नहीं, मैं अपने विपक्ष के साथियों से भी कहूंगा, पिछला बजट हाथ में लो, ये वाला बजट हाथ में लो, आवंटन की तुलनात्मक अध्ययन करो, स्कीमों के नाम का तुलनात्मक अध्ययन करो। आप पाओगे कि पुरानी शराब, पुरानी बोतल और रैपर बहुत घटिया सा नया वाला, ये चिंता का विषय है। बिहार को बेरोजगारी के दंश से निकलना है, पलायन से मुक्ति पानी है, उसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के अलावा कुछ भी नहीं। कितनी बार बिहार शब्द आया है? पिछली बार आया था क्या? अब देखिए, बिहार शब्द आने से अगर बिहार का भला हो तो हम सब उसी जाप को करें। आप भी करिए, चैनल पे बिहार बिहार चलवाइए तो मजा आएगा। लेकिन बिहार को चाहिए क्या? बिहार को एक फ्रेश इमेजिनेशन चाहिए, जिसका अभाव है। विशेष राज्य का दर्जा, बिल्कुल, उससे कम कुछ नहीं। बजट पर प्रतिक्रिया देने के लिए News24 के साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। और भले ही आप ये माने कि बहुत ज्यादा मिला है बिहार को, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ भी तो नहीं मिला है। पुरानी बोतल, पुरानी शराब, विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए आप लोग। मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, 10 साल कांग्रेस का शासन था, यूपीए सरकार, और आरजेडी उनके पल्लू को पकड़े हुए थे। बिहार में सारे परियोजनाएं अधूरे पड़े थे जो अटल बिहारी वाजपेयी न देखे गए थे। अगर मोदी जी ने दिया 1.25 लाख करोड़ 15 में कहा वो दिया, अभी दिया, और मखाना का बोर्ड खोला, विकास कौन किया बिहार का? मैं आरजेडी से पूछना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार जब हुई है तभी विकास हुआ। और ये तो फिर बेईमानी हो गई कि लोग कहते हैं बिहार का बजट है और बिहार को कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है। वो तो पॉलिटिकली। बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल मेरे साथ है। जिंदल साहब, बजट में इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी हुआ, किसानों के लिए भी बहुत कुछ है। आप हरियाणा से आते हैं जी, क्या कहेंगे किसानों के दृष्टिकोण से? अगर देखा जाए अपने राज्य के लिहाज से कैसा रहा बजट? तो देखिए, बहुत अच्छा रहा है बजट। और जैसे आपने ठीक कहा कि उनका कि जो इकोनॉमी के 4 जो मुख्य इंजन है, उनमें से एक जो है, एक हमारे किसान है, हमारे देश के अन्नदाता है, एग्रीकल्चर है। तो इसलिए पूरा का पूरा फोकस जो है वित्त मंत्री जी का खेती के ऊपर था। किस तरह से किसानों को जो भी, चाहे DAP है, चाहे यूरिया है, उसकी देश के अंदर कोई कमी ना आए, उसके अंदर जो भी किसानों को जो लोन चाहिए वो मिले, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है। तो किसानों के ऊपर तो विशेष ध्यान दिया गया, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा मिडिल क्लास के ऊपर जिस तरह के टैक्स ब्रेक दिए गए हैं, तो टैक्स की जो पहले 7 लाख रुपए पे टैक्स लगता था, अब 12 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। इससे मैं समझता हूँ कि करोड़ों परिवारों को जो है टैक्स से उनको निजात मिलेगी और उनको और उनकी जेब में उनके और पैसा आएगा ताकि जो बाकी चीजों पे खर्च कर सकेंगे। तो इसलिए कुल मिला के मैं समझता हूँ कि देश के हित में ये बजट है
और देश को, हमारे देश को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने 2047 तक, ये बजट हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए आगे लेके जाए। दीपक, शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। Is responding to the voice of the people, which is what Prime Minister Modi is known for in his administration. It's a very responsive government, and as a result, the income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we shall bring the bill in the next week. So the income tax simplification, about which in July budget I have gone in detail to say, the work is completed within 6 months is what I said. Within 6 months we've brought the bill. It will be coming into the parliament next week. So if we are talking of reform inclusive of taxation, the work is done. This budget also speaks about rationalization in customs. Tariffs are being brought down, tariffs are being simplified, and also the basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced. 8 were taken off earlier, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff picture. So the usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that we've drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for all of us to talk about. The more important thing about agriculture, which performed very well during COVID and which has contributed to India's food security, the proposals which are mentioned in this budget actually talk about everything to do with beej to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, climate resilient seeds, seeds which can give greater output, seeds which are going to be high yielding, all this together to the final point of India becoming the world's food basket. That's the definition I put in when I was talking about Vikasit Bharat. So we are making sure that India's agriculture gets the support across the board, whether it is on seeds, whether it is for skilling the farmers, whether it is rural prosperity, whether it is going to have agriculture and allied industries being set up in rural areas, and whether it is going to be farmers getting better and more loan with interest subvention, not just farmers, fishermen, and also dairy, meaning animal husbandry. So the picture for rural development and the picture for supporting agriculture is across the board, and that has been narrated. The second thing which I would want to highlight is the continued emphasis that we are giving since vote on account budget, July budget, and now on the MSMEs. Whether it is giving them sovereign guaranteed loan, whether it is support during COVID, whether the definition being changed now for better, more inclusive growth in MSMEs, access to bank credit. So MSMEs have also been given greater emphasis. Together with this, I'd like to highlight the point that energy security has had greater attention in this budget. We've highlighted in July budget how even pump storage will have greater attention. Solar and wind and renewable energy has also been taking consistently good importance in our budgets. This time we are talking about the small modular reactors. I've also announced that there shall be 2 amendments, one to the Atomic Energy Act and the other one for the civil liability. All of this is going to help us attain energy security. Insurance sector's FDI limits have been enhanced. That is another important announcement. I'll end my opening statement with 2 things. There is no reduction in the public spending on capital expenditure. Let's put that up front. We continue to place emphasis on the multiplier effect that capital expenditure done by government has shown, has sustained us. We continue on that. And with all this, our fiscal prudence has aligned itself to the glide path that we announced in 2020-21. So we've kept ourselves
in alignment. Fiscal prudence has been maintained. The next year, coming years, estimate is also been given. Well under 4.5 is what we had said earlier. We are also projecting the same. So this is just as an opening statement. There's a lot more to say, but as you all ask questions, so shall we answer. Thank you. Thank you, ma'am. 225. 225. Mic, please. Ma'am, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I just wanted to understand, ma'am, here. Ma'am, you said the new income tax bill will come next week. Will that be in the form of draft, and where you are also going to take stakeholder comments on that? Yes, as a bill, any bill goes to the standing committee, and the standing committee will of course consult with so many stakeholders, and then it will come back to us, and if necessary, any more amendments if need to be brought in, we'll bring it in and take it forward in the House. So do we expect implementation?